You're watching the news at 4 p.m. with me, Shavan Sen, starting this edition with some breaking news coming in from Srinagar, where there has been a grenade attack. Let me bring in my colleague Zeenat, who's joining us on this broadcast. Zeenat, take us through the details that you're picking up. A while back, there has been a grenade attack in busy market of Hari Singh High Street. Although the JKP vehicle, as my VJ Firdaus is showing you the vehicle, that was targeted by the terrorists by hurling a grenade. Although this is a BP vehicle, because of which the lives that were on board that have been saved. But now they are trying to change the tire and other things. This is the spot where the grenade was hurled. Although this area is a very busy market and the commercial street of Kashmir Valley, rather the Srinagar's area. This is a commercial area of Srinagar, and this is, although the grenade attack is not new to this patch of Hari Singh High Street, there have been number of grenade attacks carried by the terrorists in the very patch. But it has, if we talk about the area, as my VJ can show you the area around, see the CCTV cameras that have been put in place by the Jammu and Kashmir police long back here. Obviously, this CCTV footage is going to help Jammu and Kashmir police to find out who the terrorists were behind. As per the sources, the CASO was already launched by the Jammu and Kashmir police after getting the input about the terrorists in the presence in this area. But while the CASO was on, they hurled grenade towards the JKP vehicle. Although there are injuries, 2 injuries, one among them is a female who has received the splinter injuries. And meanwhile, we are also seeing that the CRPF officials along with the Jammu and Kashmir police have also started search in other adjoining areas of Hari Singh High Street. So this is the place, this is the very patch where the grenade was hurled by the terrorists when the CASO was on, and this is the vehicle that was targeted by them. Although it has suffered some damage, but no life has been lost. But yes, the 2 locals have been injured in the grenade attack. This is the Hari Singh High Street, and this attack is coming just ahead of Republic Day. Although we are seeing that the number of places, the mobile bunkers and other security arrangements have been put in place at many places in the Kashmir Valley. We are also seeing that the snipers have been put in place. The machinery that has been put in place, it's helping Jammu and Kashmir police along with the Indian Army and also the other forces to crack down on the terror network in the Kashmir Valley. But yes, taking advantage of the busy market here at Hari Singh High Street of Srinagar, terrorists hurled grenade towards the vehicle that belongs to the Jammu and Kashmir police, because the CASO was already on. Now, as you can see that the in this very market, some of the shops are shut, but still people are inquiring what has happened. But in this grenade attack, so far we have witnessed that the 2 injuries were reported. They have been shifted to the SMHS hospital, and also they have received splinter injuries. Talking about the last 2 years, this is the 5th grenade attack at the same patch at Hari Singh High Street. Last time also the injuries were reported when terrorists hurled grenade and also fired upon the forces here. But once again, this time when the CASO was on, terrorists hurled grenade towards the vehicle of the Jammu and Kashmir police. Zeenat, also, so that all our viewers can also understand in Hindi, if you can take us through the broadcast for the details of the area where this grenade attack has taken place. Could you describe how crowded it was, or what's the current situation right now? Have they been able to cordon off that entire area? श्रवण, देखिए, जहां मैं आपको अभी बता रही थी कि ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट एक कमर्शियल प्लेस है श्रीनगर का, जहां पर अभी ग्रेनेड हर्ल किया है। हालांकि जो ग्रेनेड जो लगा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ये व्हीकल है इस पे लगा है। आप देख सकते हैं कि टायर बर्स्ट हुआ और थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है। अब जो है यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ CRPF के जवान इस व्हीकल को वापस खड़ा करने में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। हालांकि टायर जो है वो बर्स्ट हुआ और हालांकि BP व्हीकल है इसलिए ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है और सूत्रों के अनुसार इसमें कोई बैठा हुआ भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई लाइफ लॉस नहीं हुई है। लेकिन देखा जाए, अगर ओवरऑल देखेंगे इस एरिया में, ये पहली बार यहाँ ग्रेनेड अटैक नहीं हुआ है। जैसे मेरे विजय फिरदौस आपको दिखा रहे हैं कि
किस तरह से जो जहाँ प्रॉपर्टी डैमेज की बात करेंगे तो यहाँ जो दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स की है, देख सकते हैं कि जो दुकानों का जो नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं, जो ग्रेनेड की जो आवाज़ हुई है उसकी वजह से जो है शीशे भी टूटे हैं। तो यहाँ जो शॉपकीपर्स है उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2-4 शॉप जो हैं उनमें अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला है। इस पूरे ग्रेनेड अटैक में जो है 2 लोग इंजर्ड हुए, उसमें से एक फीमेल बताई जा रही है और दोनों को जो है स्प्लिंटर इंजरीज हुई है और यहाँ से इवैक्यूएट करके SMHS हॉस्पिटल ले गई। जहाँ हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात करेंगे तो पिछले 2 साल में ये 5वां अटैक है इस तरह का जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया गया था। हालांकि एक एज जो है यहाँ पुलिस को ज़रूर मिलेगा कि ये एरिया जो है CCTV कैमरा से जो है कवर है, जिसे मेरे विजय दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो 360 डिग्री के जो कैमराज लगे हुए हैं उससे एक हेल्प तो हो जाएगी कि जो लोग जिन्होंने ग्रेनेड किया है तो उनकी कोई ना कोई फुटेज तो इसमें कैप्चर हुई है। तो एक जो है एक, लेकिन ये सारी चीज़ें तब आ रही है जबकि कल जो है रिपब्लिक डे है। ऑलरेडी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, जगह जगह जो है चप्पे चप्पे पे नाकाबंदी भी है और कई जगह पर जो है फ्रिस्किंग वगैरह चल रही है। ओवरऑल भी देखा जाए तो 26 जनवरी के मौके पर जो है लोगों का मूवमेंट वैसे भी कम ही रहता है और जहाँ कोरोना की महामारी भी है उसमें भी लोग जो है काफ़ी नंबर जो है बाहर निकलने में के लिए बहुत ज़्यादा कम जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई दिनों से जो है जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस हो रहे हैं कोविड के वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है लोगों में एक प्रिकॉशन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टेररिस्ट ने ग्रेनेड फिर से हरल कर दिया। JKP की गाड़ी थी जिसको टारगेट बनाया गया और सूत्र के अनुसार जो है यहाँ ऑलरेडी जो था कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था। इस रायबाला का जो एरिया है, जो जोनिंग एरिया है, वहाँ कैसो चल रहा था और कैसो के बीच में जो है टेररिस्ट ने प्रेजेंस दिखा के ग्रेनेड मार दिया जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की व्हीकल पे लगा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मोबाइल बंकर्स और बाकी चीज़ें भी यहाँ लगी हुई है, लेकिन एडवांटेज ये रहेगा कि जो CCTV कैमरा की जो फुटेज रहेगी कि उसमें शायद कोई आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन लोग इसमें शामिल है। और आज भी देखेंगे तो ओवरऑल जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस कश्मीर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस जो खासकर कश्मीर जोन ने जो चलाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झटके लगे हैं, जैसे कि जैश मोहम्मद के कई लड़के जो है न्यूट्रलाइज हुए हैं इन ऑपरेशन में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एक रिटेलिएशन भी है टेररिस्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस मेंटेन कर रहे हैं कि जो लोग भी इसमें है उनको नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि कैसोस कई जगह पे इन्होंने लॉन्च किए हैं और कुछ ऐसे लड़कों को भी उठाया गया है जो OGW नेटवर्क के साथ चलते हैं या जिनके कुछ ना कोई एफिलिएशन जो है टेररिस्ट के साथ रहा है, तो उनकी क्वेश्चनिंग भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो स्पॉट की जो विजुअल्स हम आपको दे रहे हैं उसमें ये है कि श्रीनगर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी यहाँ और साथ साथ CRPF के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और जब जगह जगह पर भी जो है अभी सर्च ऑपरेशंस को जो है अभी लॉन्च कर दिया गया है। Thank you very much, Zeerath, for getting us the latest details. Trust you to keep us ahead as we would be closely tracking all developments in Srinagar.